Okay, we latestly understood like what is the difference between lazy and greedy quantifiers of the regex. So ultimately, the greedy one means if we are not using dot operator uh, with the I mean we are not, if we are not applying any quantifier on the dot operator, then in that case it is a greedy. But there is a problem with the dot. So when we use the dot option, when we apply any quantifier on the dot option, in that case we see some issues. So because the dot considers all the characters except new line. So I told you the reason. So let's say this is what we are doing. We are just to recognize the values which are itself opening and closing, which are inside the curly parentheses, right? So if you see it is matching just one match, and which thing is being matched, it is matching the complete. Why? Because when it is being matched here at the first, so dot actually matches everything, and then when a text is completed, then in that case it takes it does the backtracking for one step and matches the last thing and then completes one match. But what happen if we have to check every small content? That means we are asking ki you need to capture small content, not the complete content in a single go. So we can ask regex pattern to Apple to use to be lazy with the with the dot operator by applying the 0 or 1 operator along with the any other greedy operator. So this way, what will happen? It will ask this star option to check from its lowest range. So star means 0 to many. Many means the I guess it if it is the integer, then the max of integer is the many of this operator. So from 0 to unlimited or whatever way. So if it will check whether there is any correct, is there any, is there any no character between both of these, then it will capture one. If there is any dot operator, then the lowest estimate 0 or 1 2 3. So it found 3. Oh, it's okay. If there is any which is this, it will also count this one. So it will start considering those from the left. It will start capturing those parts which fulfill the criteria based on incremental way. Incremental way means from the lowest range of this operator to highest range, from 0 to 1 to 3 and go on. Same way, if you say that I have using plus means one to many, right? So I believe one to many means okay, one to many means let's say it is just taking one to many means many. But if I say that this, then it will, what will do, it will actually doing taking one this as a simple one, which is also incorrect. So although, but yeah, there is a difference between with this option and with this option. So it is taking this one and say, so this is the hack to use this one option. And I guess, yeah. And with this option, let's say we are not applying any kind of lazy one, it is a greedy one. So it will actually consider the maximum available availability of this dot. So maximum is one because starting is the this one and ending is this one. So it will capture, it will consider, dot will capture everything like this. है ना? So now if we have to ask it to capture small things, not the complete one full string. So you can just ask either it's start from its lowest range. So it is taking 2, then more. If I say that there is any one with more less than 0, less than 2, then it will take this complete one.
not the just this one, because it we have defined the range. uh, and this is how it is going. And yeah. सो कहने का मतलब ये है कि आप यदि कोई भी ऐसे डॉट के साथ में कोई भी क्वांटिफायर यूज़ करते हैं। क्वांटिफायर मतलब जैसे कि आप क्वांटिफायर में कौन कौन से क्वांटिफायर, लेट्स से आपने ये वाला क्वांटिफायर यूज़ किया, या ये वाला यूज़ किया, या ये वाला यूज़ किया, या फिर आपने ये वाला यूज़ किया, या फिर आपने ये वाला यूज़ किया। इनमें क्या है, जिनमें रेंज होती है, जैसे इसमें क्या है, इसमें भी रेंज है 0 से लेके 1 तक। इसमें क्या रेंज है, 0 से लेके जितनी आपकी इंटीजर की या उसकी मैक्स होती है वहां तक। इसमें क्या होता है, 1 से लेके इंटीजर की मैक्स तक। इसमें क्या होता है कि एन से लेके जो भी मैक्स है इंटीजर की, इसमें क्या होता है एन से लेके एम तक। जो रेंजेस है ना, यदि आप ऐसे वाले क्वांटिफायर डॉट को अप्लाई करेंगे, तो उसमें रिजल्ट्स आपके एज एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे। इसमें फिर क्या होगा कि जैसे आपने डॉट के संग अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये किया, अब इसकी रेंज क्या है, 2 से 13 है। तो होगा ये कि जैसे मान लो ये सर्च कर रहा है इसमें, आपने ये नहीं लगाया, तो व्हाट इट इट विल डू कि पहले ये मैच करेगा, ये उसको पहले मिल गया यहाँ पे। उसके बाद डॉट में वो ग्रेडी रहेगा। ग्रेडी मीन्स कि मैक्स इसकी जो लिमिट है ना, जो डिफाइन की हमने, वो उसको पकड़ेगा और वहां तक मैच करना चाहेगा पहले तो जैसे इसने यहाँ तक मैच किया, अब लेट से मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको करता हूँ, तो इसने क्या किया, आप 13 काउंट करोगे तो ये यहाँ तक मैच कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि 13 इसकी यहीं तक खत्म हो जा रही है ना। अब इसने 13 तक मैच कर लिया, और फिर ये जहाँ मैच हुआ वहाँ देखा कि यार मुझे एंड तक आ गया हूँ मैं, ये आप देखो एक्स्ट्रा क्या बचा मेरे पैटर्न में। उसे ये मिला, तो फिर उसने एक बैक ट्रैक करके इसको मैच किया, जहाँ बैक ट्रैक में मिल गया ये, वहाँ पूरा बना दिया। तो इसने देखो ये पूरा पूरा एक स्ट्रिंग निकाल के दे दी। ठीक है। अभी क्या है कि ये पैटर्न ग्रीडी था क्योंकि इसे मैक्स को पकड़ा था। हम इसको लेजी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट ऑपरेटर है उसके संग हमें लेजी यूज़ करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमें छोटा डॉट पकड़ के आए, तो वो लेजी मतलब अब क्या होगा कि यदि हम इसके संग ये वाला यूज़ कर लेंगे, देन इट विल लाइक कि इट विल कैप्चर इस ये फिर आपके जो लोएस्ट रेंज है ना जो आपने डिफाइन किया हुआ है उसको लेके चलेगा। तो इसने देखा यार इसमें तो जीरो है, दो तो मिनिमम ही है, तो ये तो कंसीडर हमारा होगा नहीं। फिर इसने देखा कि यार ये इसको फिर ये डॉट के अकाउंट में ले लिया। फिर DN7, देन इट चेक्स कि ये आपके जो काउंट्स हैं वो आपकी दो है नहीं, दो से बड़े हैं। फिर 3 4, तो 2 से 13 के बीच में जहाँ पे भी, बट इंक्रीमेंटल वे में 2 से स्टार्ट होगा इसका। तो जहाँ पे भी आपका ये मैच हो जाएगा, in that case it will make it as a complete match. Same will it will start again for a new match this way, and this way all the matches will occur. So ultimately saying कि आपकी जो मैच स्टार्ट होगी वो आपकी लोएस्ट रेंज से स्टार्ट होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रीडी। अब ये किन किन पर अप्लाइकेबल है, सो आप whenever you are using दिस इस दिस ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे भी रेंज है, यहाँ पे भी रेंज है, यहाँ पे भी रेंज है, इसमें रेंज नहीं है, सो आई गेस इसके संग कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे रेंज है, आ, यहाँ पे भी रेंज है, तो इन्हीं के संग इशू आने वाला है। अभी तो डॉट के साथ ही देखा है कि डॉट पे अप्लाई करोगे क्वांटिफायर तभी इशू आएगा, बट आई एम चेकिंग वन मोर सिनेरियो विच इज़ दिस वन। सो लेट्स सी कि यहाँ पे मुझे क्या फाइंडिंग मिलती है, आई विल टेल यू।